Okay, so what amplifier means? Yes, Keshav? For increasing intensity. For increasing the intensity or amplitude in general, amplitude of a signal and information is increased with the help of amplifier. So because here amplitude was smaller, and after passing through this signal is passed from this amplifier, and after that the intensity or amplitude of this signal have been increased. So this is the basic application of amplifier. In addition to this amplification task, operational amplifier performs mathematical operations such as addition, subtraction, integration, differentiation, log, anti-log. So this is the additional task that operational amplifier do in comparison to the normal amplifier. After that, I told that this comes to us, this is available to us in the form of an integrated circuit IC, like this. So the number one is this negative power supply, then the inputs, then offset. So the notch is here, and then this is the output of OPAMP. The symbol of OPAMP also, I told that symbol is similar to the diode, but it is having two inputs instead of one input. It is having two inputs. So this is how it is different from a normal diode, diode symbol. So one of the input is called inverting input. Another input is called non-inverting input. So when you apply input to inverting terminal, if you apply a input to this inverting terminal, if I apply this, suppose red signal to this inverting input, then what it will do, it will do the phase shift. It will amplify in the same way, but instead of going to the positive side, it will go to the negative first, and then it will go to the positive. So for this red signal, what is happening? This is getting 180-degree phase shift. 180-degree phase shift. So because of this inverting terminal, this phase is changing. Phase means movement. So 180-degree tilt हो गए, जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर, ये आउटपुट में आता है. And if you apply the same signal to the non-inverting, then it comes as it is in the output. There is no phase shift in this case. After that, I told what is gain. Gain means how much output voltage was there and how much input voltage was there. So how much it have increased, इसने double किया कि triple किया कि 4 times किया कि 6 times किया कि 10 times किया, ये कैसे पता चलेगा? वोल्टेज को वोल्टेज से डिवाइड करना पड़ेगा. सपोज आपने 1 माइक्रोवोल्ट अप्लाई किया था और आउटपुट में 1 वोल्ट आ रहा है, तो कितने टाइम से ये एम्पलीफाई हो गया? सपोज आपने 1 माइक्रोवोल्ट अप्लाई किया था एक ओपैम्प में और आउटपुट में 1 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, तो ये कितना, इसका गेन कितना हुआ? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. सपोज आपने किसी ओपैम्प में 1 माइक्रोवोल्ट इनपुट लगाया है और आउटपुट आपके पास, सपोज आपका इनपुट है 1 माइक्रोवोल्ट एंड आउटपुट है 1 वोल्ट. एंड व्हाट इज द गेन ऑफ ओपैम्प? इसका गेन कितना होगा? कितना होगा गेन? 10 to the power 6. 10 to the power 6. Simple. Just you have to divide output to input. So gain is equal to 1 volt, that is in output, divided by input voltage, that is 1 microvolt. So 10 to the power 6 is the gain. Okay, so how input is taken in the op amp? इसमें input लिया कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 2 input हैं.
कैसे पता चलेगा कि आपने 1 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया है या 1 माइक्रोवोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है? ये कैसे पता करें? एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट को एज ए वोल्टेज डिफरेंस लिया जाता है, किसी एक इंडिविजुअल टर्मिनल का वोल्टेज नहीं। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज सपोज V1 है, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज सपोज V2 है, तो आपका जो इनपुट होगा वो V1 माइनस V2 होगा। मतलब आपका गेन कैसे कैलकुलेट होगा? V आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर मैंने 1 माइक्रोवोल्ट इनपुट बोला है। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Actually, power cut हो गया। Am I audible still? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is operational amplifier. That what I was discussing. I was saying that this is actually gain of OPAMP is not a simply just output upon input. It is a difference of inputs. Means we take differences of inputs instead of taking an individual value. Okay. I am saying that the output voltage is 1 volt and input voltage is 1 microvolt. So 1 microvolt is actually the difference of V1 and V2. This is not a single value. This is actually a difference of V1 and V2. Single value. So we take, if I take if I am saying 1 microvolt, that means I am saying the difference between V1 and V2 is 1 microvolt. That doesn't mean that only the value of V1 is 1 microvolt or V2 is 1 microvolt. The difference between V1 and V2 is 1 microvolt. This is differential gain. Again, there is one more gain in this, which is called another gain, that is called common mode gain. So what actually happens that instead of this goes through OPAMP, this difference goes, and in addition to this difference, if we connect these two, means same voltage to both of the terminals, then what should happen? If I connect a voltage V, let us say common voltage VC, to both of the terminals, then what should be the output? जब ये डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है और जब डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। जब दोनों को शॉर्ट कर दोगे तो दोनों डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जब डिफरेंस जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए? Infinite. जीरो होना चाहिए ना। कैसे, क्यों जीरो होना चाहिए? देखो, तो gain is equal to whatever gain is equal to output voltage divided by V1 minus V2. When this V1 minus V2 is 0, which implies output voltage is equal to gain multiplied by V1 minus V2. So this is 0 multiplied to gain, then output voltage is 0. Okay. If we connect like this, then what will happen? Output voltage should be 0. But practically what happens? Instead of becoming 0, it gives some value. Means it provides some value. It is not completely 0. And this gain, when inputs are common, inputs are same, this gain is called common mode gain. Common mode gain is very small. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। The common mode gain, this gain is called common mode gain. And common mode gain is actually the output voltage divided by this common voltage between V1 and V2, that is called this is VC. So this gain, ideally it should be 0. Ideally this common mode means when we apply same input voltage, then there should not be any output. So ideally
I represent this gain by AC, and previously we had gain. That gain is called differential gain. जो हम लोग पहले gain की बात कर रहे थे, इसे कहते हैं differential gain, क्योंकि difference को amplify करता है. तो this is very high in general, जो बहुत high होता है, 10⁶ के रेंज में है यहाँ पे. एंड ये जो होना भी चाहिए, जितना हाई हो उतना अच्छा है. और ये जो गेन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन मोड, व्हेन कॉमन मोड इनपुट होता है, कॉमन इनपुट होता है, तो कॉमन मोड गेन AC शुड बी वेरी लेस. Ideally differential gain should be infinite and common mode gain should be 0. For ideal amplifier, ideal op-amp, what should be there? This common mode gain should be 0 and differential gain should be infinite. Okay. हमने op-amp के गेन की मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है दो टाइप का हुआ, एक कॉमन मोड गेन और दूसरा हुआ डिफरेंशियल गेन. डिफरेंशियल गेन की वैल्यू ज्यादा होती है, कॉमन मोड गेन की वैल्यू कम होती है. आइडियली डिफरेंशियल गेन इनफाइनाइट होना चाहिए होता है और कॉमन मोड गेन 0 होता है. ठीक है, इतना हम लोग समझ गए. अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ op-amp. ये हम लोगों ने गेन देख लिया. गेन में क्या होना चाहिए कि AD का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, AC का वैल्यू कम होना चाहिए. डिजाइनर जब डिजाइन करता है तो ये मान के चलता है कि दोनों को इक्वल लगाने से कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन उस लीकेजेस जो इसके इनसाइड में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, उनमें कुछ लीकेजेस होते हैं, तो उस लीकेज की वजह से कुछ आउटपुट आ जाता है. तो ये आउटपुट आ जाता है, ये कॉमन मोड गेन हो जाता है. तो कॉमन मोड गेन जितना कम होगा डिजाइन में, आपका जो op-amp बनाया गया है उसमें कॉमन मोड गेन जितना कम होगा उतना अच्छा op-amp होगा. डिफरेंशियल गेन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा op-amp होगा. तो इस op-amp की क्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक पैरामीटर बनाया गया जिसको कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मतलब क्या है? ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMRR. ये होता है डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन. तो आप बताओ इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? CMRR की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. आइडियली इसकी वैल्यू कितनी होगी? आइडियल केस वैल्यू CMRR विल बी infinite. हाँ, infinite. Ideally this should be infinite because ideally AD is infinite, AC is 0, so this will be infinite ideally. But practically it will have some value. When we go for practical designs of op-amp, there is some value of CMRR, 90 dB, 100 dB around, and because AD is not infinite, AC is not 0, therefore CMRR will have some value. So CMRR is usually represented in dB, in decibels, and that is 20 log AD by. This is the equation of CMRR. Okay. There are other properties of operational amplifiers like whatever will be its voltage gain, input impedance, output capacitance, output capacitance, operating bandwidth, input bias current, input offset voltage, and the gain bandwidth product like that. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो रिलेटेड है वोल्टेज गेन से. वोल्टेज गेन दो टाइप का होता है, डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन मोड गेन. और इसी से रिलेटेड एक टर्म है CMRR, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी इनपुट इम्पीडेंस. इनपुट इम्पीडेंस के बारे में डिस्कशन होता है, आउटपुट इम्पीडेंस, और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनपुट कैपेसिटेंस.
और फिफ्थ प्रॉपर्टी है आउटपुट कैपेसिटेंस, और सिक्स प्रॉपर्टी है ऑपरेटिंग बैंडविड्थ, सेवन प्रॉपर्टी है स्लीव रेट, एट प्रॉपर्टी है इनपुट ऑफसेट करंट, नाइन प्रॉपर्टी है इनपुट बायस करंट, इनपुट बायस वोल्टेज, ओके, ऑफसेट वोल्टेज, 10th नंबर ऑफसेट वोल्टेज। एक प्रॉपर्टी और है वो है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जीबीपी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में जो कुछ कॉमन ही होती हैं हर एक एम्पलीफायर में। तो इस एम्पलीफायर में हम लोग गेन ये सब सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए मेरे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं।